AIU 6403 क्लासरूम मैनेजमेंट के स्टूडेंट, अगर आप न्यू एग्जाम पेपर पैटर्न के मुताबिक प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये 15 MCQs आपके लिए बहुत यूज़फुल है। देखिए कितने आंसर आपको पहले से आते हैं। सो सवाल नंबर फर्स्ट, द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट इज़ टू, नीचे दिए गए आपके पास चार ऑप्शन है जिनमें से एक सही है। सो बी इज़ राइट, गेट कंट्रोल ऑन द स्टूडेंट बिहेवियर। हमारे पास दूसरा सवाल है, अकॉर्डिंग टू वोंग 2004 क्लासरूम मैनेजमेंट refers to a method to punishment student. B, practice to maintain environment where instruction and the learning can occur smoothly. So B is the right your answer. सवाल नंबर 3, classroom management focus on three major components. So option 1 is right, A is right, content, conduct and convenient management. So option A is right. इस तरह से सवाल नंबर 4, द टर्म प्रोसीजर इन क्लासरूम मैनेजमेंट refer to option A, something student do automatically, something the teacher want to do. So B is right. C, a punishment for misbehavior, a reward system. So B is right. नोट, ये सवाल आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको इग्नोर ना करें, ठीक है। सो सवाल नंबर 5, विच सीटिंग अरेंजमेंट अलाउ द होल क्लास टू सी द ब्लैक बोर्ड ईजीली. सो ऑप्शन सी इज़ राइट. रॉ अरेंजमेंट इज़ अ वेरी गुड सीटिंग अरेंजमेंट. सवाल नंबर 6, द हॉर्स आर यू स्टाइल सीटिंग arrangement is a combination of circle and rows. The right option is A. इस तरह से सवाल नंबर 7, according to the next text, which seating arrangement is the most suitable for primary level student? Option A, rows, circles, clusters and pair seating. So option C is a clusters. Question number 8, the physical arrangement of the classroom can only affect student behavior, either support or delay instructional effort. So B is your right option. नोट रहे, ये सवाल आपके जो न्यू पैटर्न के हिसाब से आएंगे जिसमें आपके 40 MCQs होंगे। मैंने इसमें 15 ऐड किए, होपफुली आपके इसमें काफ़ी आ जाएं क्योंकि मैंने सारे बुक के कवर किए MCQs चैप्टर वाइज। सो सवाल नंबर 9, Crowley Everson's emphasized that classroom arrangements should be permanent throughout the year, minimize distraction and maximum assist. So B is the right answer. सवाल नंबर 10, which of the following is not a component of classroom management? Financial planning is a not component of classroom management. सवाल नंबर 11, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द क्लासरूम मैनेजमेंट इज प्लान डिजाइन बाय द टीचर. द रोल राइज योर हैंड टू आस्क अ क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लासरूम रोल. सो सवाल नंबर 13, कंसिस्टेंसी इन द क्लासरूम मैनेजमेंट मीन्स बीइंग स्ट्रिक्ट all the time. B, everything a teacher does should be consistent. So option B is your answer, is right. सवाल नंबर 14, which of the following is a major reason for the need of classroom management? Option A, to make student afraid of the teachers. Option B, to create a productive learning environment, is option B is right. To complete administration task, to reduce teacher workload. So B is your right answer. 15, classroom management helps teachers to only maintain discipline, engage student in purposeful activity, is B is your right. Avoid a lesson planning, reduce teaching hours. सवाल नंबर 16, the 6 basic component of classroom management include all aspect learning goals, routines, building, maintenance, constancy. So except ये आपका C is a right answer है. 17, according to the
Text. Which component focus on the rewarding positive behavior? Correction and discipline. B. Encourage and praise. B is your right answer. Classroom rule constancy. So already highlight your bold. B is your right answer. Classroom roles should be posted and visible location. So सवाल नंबर 90 individual difference in student include all except cognitive style, temperament, same learning pace or cultural background. So option C is right, same learning pace. सवाल नंबर 20 Asperger syndrome is a type of physical disability, perceptive development disorder, learning disability only, visual impairment. So option B is right. Question number 21 ADHD is a diagnosed for frequently in girls and boys. Boys then girls is your right answer, equal in both genders, only in adults. So B is your right answer. Question number 22 optional dependent disorder ODD is a characterized by attention by hyperactivity, uncooperative, defiant and hostile behavior. So B is your right answer. So 23 conduct disorder CD include only mind behavioral issue, aggression to people, animal. B is your right answer, only academic problem, only emotional issue. बज़ दफ़ा मैं कई दफ़ा ऑप्शन जस्ट राइट पढ़ रहा हूँ या 2-3 पढ़ रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा जो भी ऑप्शन है उन चारों को स्टडी कीजिएगा, पढ़िएगा ताकि आपकी वो अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल स्ट्रॉन्ग अच्छी सी हो जाए। इस तरह से हमारे पास सवाल नंबर 24 है अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट विच कॉग्निटिव स्टाइल प्रीफर टू एनालिटिकल अप्रोच वर्स ग्लोबल अप्रोच। सो ऑप्शन ए इज़ राइट, फील्ड इंडिपेंडेंस वर्स फील्ड इंडिपेंडेंस, ये आपका सही जवाब है। दूसरे भी आप देख लें। So सवाल नंबर 25 temperament refers to option A academic achievement, option B quality intensity of emotional reactions, physical appearance, option C social status. So option B is your right answer. Question number 26 the temperament characteristics adaptability refers to option A how child refer to new peoples, B how long it takes to adjust to change, C the energy level of response, the child's physical energy. So option B is your right, already bold. So सवाल नंबर 27 cultural background affect classroom dynamics because option A all cultures value learning in the same way, option B different cultures have different learning values and roles. So option B is right. Question number 28 a passive learning environment is characterized by A student actively explore topics, option B teacher presenting stimulus and assessing response, option C student controlling their learning, option D collaborative learning activity. So option B is the right answer. Question number 29 in an active learning environment teacher in complete control, B student pursue topic that interest them. So B is your right answer. Question number 30 the physical setting of the classroom include all except furniture arrangement, lighting and temperature, C students home environment is the right answer. So सवाल number 31 school climate consists of all the following dimension except option A safety, option B teaching and learning, option C student personal income, option D school home community partnership. So option C is right. Question number 32 self-esteem in students is positively corrected with strict punishment, academic performance, long homework hours, competitive environment. So B is the right answer. 33 which strategy help build self-esteem in the classroom?
ऑप्शन ए पब्लिक criticism of mistake. Option B addressing behavior properly. Option C comparing students with each other. Option D ignoring student achievement. So option P is your right answer. So question number 34. The practice of the living conscientiously in self-esteem development, including A. Ignoring feedback, B. Being present to what we are doing, C. Avoiding self-reflection, D. Denying fact. B is your right answer. काइंडली अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा इस तरह से मेरा पढ़ाना आपको कैसा लग रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा जो भी आपको समझ आए, ठीक है। अदरवाइज़ कोई इशू हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सर हमें इस तरह से MCQ बताइएगा, तो मैं कोशिश करूंगा इसी तरह आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। सो सवाल नंबर 35 आल्सो फर्स्ट 36 37. So routine help in supporting the development of only academic skills, B functional skills, only physical skills, only social skills. So B is your right answer. Question number 38. When developing rule with a student, the first step is to writing the roles immediately. B review their goals is your right answer. इस तरह से 39. A code of conduct in school is optional for student. The standard of expected ethical behavior only for teachers, not important. So B is your right answer. 14. Which an example of the routine? Option A. Do not run in the corridor. Option B. Steps for the turning in homework. C. Respect others. D. Raise your hand before speaking. So option B is your right answer according to your book. नोट रहे जो भी मैं सवाल MCQs के जवाब हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपकी बुक से ली हैं, 6403 के क्लासरूम मैनेजमेंट के बुक से लिए, उनसे ही MCQs लिए गए अकॉर्डिंग टू योर बुक, ठीक है। इस तरह से हमारे पास सवाल नंबर 41 है, वो भी देख लें। 42. Behavioral management including action to enhance productive and social acceptance behavior. 43. 44. 45. 46 also देख लें। 47. Positive reinforcement strategies produce only temporary change. B. Long-term attitudinal change. So B is your right answer. इस तरह से 48. The Hawthorne effect refers to increased productivity due to physical change, special attention given to subject imparting findings. So B is your right answer. इस तरह से हमारे पास 49 है, वो भी देख ले। Last but not the least, according to the text, teachers should not A. use positive reinforcement, B. use harsh or embarrassing punishment, C. establish clear rules, B. be consistent. So B is your right answer. इस तरह से ये आपका पार्ट नंबर 1 मुकम्मल हुआ। पार्ट 2 हमारा जो होगा उसमें आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन से 10 होंगे, 10 मैं कोशिश करूँगा आप मैं वो 15 रखूँ, और जो अपने लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें अलामा अकबर की पॉलिसी एक आपका लॉन्ग होगा, तो मैं कोशिश करूँगा उसके 5 ऐड करूँ, इंशाल्लाह उसमें एक या आ जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए काइंडली कमेंट में बताइएगा आपको हमारा ये पहला वाला पार्ट वो कैसा लगा, इसमें कोई फर्दर चेंजिंग हो वो भी बता दीजिएगा। इंशाल्लाह आई होप सो आई विल मेक करेक्टिंग देम, एंड इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच। अल्लाह ने के बाद।